हेलो गाइस। आज हम जो सीखेंगे वो होगा ननचक को कैसे चलाना है। मैं आपको बहुत ही बेसिक वे में समझाऊंगा कि कैसे आप ननचक सीख सकते हो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से। तो आपको क्या चाहिए इसके लिए? आपको चाहिए ननचक्स। ये मेन ननचक है, पर मैं आपको सिखाऊंगा, आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक फोम ननचक ले या प्लास्टिक ननचक ले, और एक ऑप्शन है यू मेक योर ओन ननचक, कार्डबोर्ड ननचक। ये सिर्फ एक सिंपल कार्डबोर्ड से उसको रोल करके ननचक बन सकता है। यहाँ पे एक धागा या थ्रेड लगाकर यू कैन मेक योर ओन कार्डबोर्ड ननचक। इट्स द सेफेस्ट टू यूज, आई विल टेल यू। तो हम चलते हैं, हम इसको अभी रख देते हैं फिलहाल के लिए। कैसे ये ननचक बनाना है, हाउ टू मेक दिस कार्डबोर्ड ननचक। आपको कार्डबोर्ड का पीस चाहिए, उसको रोल कीजिए, बहुत सिंपल है। उसके ऊपर टेप लगाकर ये आ जाएगा, और एक थ्रेड लगा दो, ननचक बन जाएगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आपको फोम ननचक नहीं मिल रहा है, और अगर आपको क्या बोलते हैं प्लास्टिक ननचक नहीं मिल रहा है, आप कार्डबोर्ड का ननचक बनाइए। इससे क्या होगा, आप जब एकदम नया नया प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सेफ रहोगे। आप कभी भी आपका सर पे नहीं लगेगा या गले पे नहीं लगेगा, शोल्डर्स पे, एल्बो पे, फिंगर्स पे या नीज पे। तो ये एकदम बिगिनर्स के लिए, फॉर द बिगिनर्स इट्स बेस्ट टू यूज़ फोम ननचक, प्लास्टिक ननचक, और मेक योर ओन ननचक विथ कार्डबोर्ड और वॉट एवर। इट शुड बी लाइट, इट शुड नॉट हर्ट यू, यू नो। जैसे ये ननचक है, ये वुडन ननचक है, ये बहुत हार्ड है। ये अगर सर पे लगता है तो बहुत चोट आता है। इसलिए मैं बिगिनर्स के लिए रिकमेंड करूँगा, फॉर ऑल द बिगिनर्स आई रिकमेंड मेक योर ओन ननचक इन योर हाउस। तो लेसन नंबर 1 क्या है, फर्स्ट लेसन क्या है आज का? मैं आपको कुछ लेसन्स में आपको ये सिखाऊंगा जो आप एक या दो वीडियो में आप एक डिसेंटली अच्छा ननचक यू कैन यूज़ इट। ओके, फर्स्ट दिन का लेसन ये है, सिर्फ ननचक को पकड़ना कैसे है, हाउ टू होल्ड द ननचक। शैल बी होल्ड द ननचक फॉर हेयर और फ्रॉम द मिडल और फ्रॉम द बॉटम। अगर आप ननचक को बॉटम से पकड़ते हो, आपको रीच मिलता है बहुत, यू गेट द रीच इफ यू आर होल्डिंग फ्रॉम द बॉटम, बट ये एक अच्छा पोजीशन नहीं है। आपके लिए बेस्ट अगर पकड़ना है समवेयर इन द मिडलिश लाइक दिस, इससे अच्छा आपको ग्रिप मिलेगा और यूज़ करने में इजी होगा। तो आपके लिए पहला चीज़ क्या करना है, फर्स्ट स्टेप, ननचक को ऐसे पकड़ना है, होल्ड द ननचक फ्रॉम अराउंड द मिडल, एंड फर्स्ट इज बैक फ्रंट, प्रैक्टिस बैक एंड फ्रंट। When you are doing front, make sure your elbow moves out. You don't want to do it like this and hit your elbow. So when you are doing back, it's fine. The elbow can be straight, but when you are bringing it in the front, elbow moves out. Front, back, front, back, front, back, front, back. And with the main nunchuck, do the same thing, back, front, back, front, back. Thing is, your nunchuck, whether it's your wooden nunchuck or aluminium nunchuck or steel nunchuck or your cardboard nunchuck, foam nunchuck or plastic nunchuck, it should not hit your head, should not hit your neck, should not hit your shoulders, elbow, fingers, knees. But you can hit and bounce off your body, of your arms, of your thighs. It should bounce off, you know, smoothly. So first step, just do this. If you want to keep your hand like this or do a Bruce Lee style,
you can do that. And that's up to you. First step today, just do this. So you go back, elbow can be straight, no problem. Front, elbow moves out. Back, front, back, front. From the side, it looks like this. Do this any number of times according to you. If your body is not used to too much exercise, don't do it too much. And always before any exercise, consult your doctor, your GP, that whether you should do certain exercise or not, whether it's martial arts or it's aerobics, it's yoga, whatever it is, always consult your doctor first. So first step, I would do today 1,000, but you do it according to you. Back, elbow can be straight or a little bit bent, up to you. But when you bring it front, elbow have to move out. Elbow moves out. Carry on. Today, just carry on with this. So the step is make your own cardboard nunchuck and just practice simple back and front, back and front, back and front. No second hand involved, just front hand. You can do with both the arms. Okay, same thing. Goes back, front, back, front, back, front. Even when you are using your cardboard nunchuck, make sure you don't hit your head. For practice, you should be, even with this cardboard nunchuck, you should do it smoothly. Not hitting your head, not hitting your neck, not the shoulders, not the elbow. Then you know you're good. So follow me. Back, front, back, front, back, front. You are doing with your cardboard nunchuck. Back, front, back, front, back, front. You should use both the hands. Suppose you do 100 with one hand, do another 100 with the left hand. Okay. Right now, I'm not using my other arm at all. Just follow me. Back, front, elbow moves out, back, front, front. Cool? Second step for today, second lesson for today. You can involve your second hand now. So what you do is, when you do the transition, when you change the nunchuck from one hand to another, you use your other hand, you know. So it always goes like this. But today we will not do transition. We'll just use our hand to use it with the nunchuck. So we are ready to do the transition. So what you do is just keep your hand here. And this one, nunchuck, when it goes back, it hits your palm here on this side, not the other side. So this cardboard nunchuck will hit your palm here, like this. So it stops. So you have an option now. Either you want to do the transition, so you can just grab it and do a transition. And if you don't want to transition, it will just bounce off from your palm. And you bring it in the front. When you bring it in the front, just change the palm to this side. So it hits your front side again of the palm. It should not hit your fingers over here. So goes like this and this. So step one is make your own cardboard nunchuck. Simple cardboard, some threads, some tape, that's it.
Simple as that. Anyone can make it. If you are a child, you can use this. It's the best to use. And a beginner, whatever age, use this. First step, make your nunchuck, cardboard nunchuck, or get a foam nunchuck, or get a very light plastic nunchuck. I would not recommend proper wooden nunchuck or steel nunchuck, no. Second step, just do the basics, front and back, with your elbows moving out when you bring it to the front. That's all. Second step, this is the second lesson. Third lesson, you involve your second hand. So it goes back, hit your palm, front, hit your palm, front side. Hits. I'll do this one. So what you do is, take it back, okay? Back, just hit it. Front, back, back. It should bounce. It should bounce. It should be automatic, you know, your brain and hand should coordinate, you know. Don't go the other way around, like hitting on your backside of your palm. Don't do that. Only on this side. It should bounce off. It should bounce off. So go back. So what happens? You have option. Either you just want to bounce it off, bring it front, or you can grab it and do the transition. So now no transition, just simple back and front. Same, back, front, back, front, back, front. Today's next lesson and today's final lesson, how to hold it from here. So what you do is, this is a position, it's a ready position. You basically hit it